हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं साउंड टेस्टिंग करने वाला होगा इस बोट पार्टिवल 400 का। इसका मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो डाल के रखा है, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। आज जो है हम सीधा इसका साउंड टेस्टिंग करेंगे गाइस कि इंडोर में इसका साउंड किस तरीके का है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं स्पीकर हमारा ऑन है और यहाँ पर हमने इस फ़ोन के साथ जो है इसको कनेक्ट भी कर लिया है। बैटरी भी देख सकते हो पूरा यहाँ पर 80% दिखा रहा है। तो इसका साउंड टेस्ट करेंगे और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा गाइस कि इस प्राइस पॉइंट में आपको इस स्पीकर को ख़रीदना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि ये जिस प्राइस पॉइंट में आता है लगभग 12-13 हज़ार में आपको और भी अलग अलग ब्रांड के मिल जाते हैं। जेब्रोनिक्स वगैरह का, क्लेरियन का भी मिल जाता है। तो अगर आपको इसको ख़रीदना है तो किस तरीके का साउंड आपको मिलेगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए, ब्लूटूथ हमने कनेक्ट कर लिया और कुछ गाने यहाँ पर से प्ले करके मैं आपको सिखा दूँगा और मेरा लाइव एक्सपीरियंस भी मैं आपको लास्ट में बता दूँगा। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on
इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें गाइस तो साउंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाउड है। तो अगर आप लोग आउटडोर में इसको यूज़ करना चाहते हो तो आपके लिए बढ़िया होगा, लेकिन अगर आप लोग इंडोर में यूज़ करोगे तो इसका जो है ट्विटर है गाइस उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा लाउड जो है साउंड आता है, तो कानों में जो है चुभने लग जाता है अगर आप लोग फुल साउंड में इसको जो है प्ले करोगे। लेकिन आउटडोर में जो है ये ट्विटर बहुत ही बढ़िया काम करता है, साउंड बहुत ही लाउड है, बेस भी बहुत ही अच्छा है गाइस। अगर आप लोग इंडोर में किसी कोने में जो इसको रख के प्ले करोगे तो आपको बेस बहुत ही ज़्यादा जो है लगेगा। ठीक है गाइस, बेस थंपिंग है और आउटडोर के लिए बना हुआ है। और एक इसमें एक प्लस पॉइंट है कि अगर आप लोग इसको बैटरी में बजाओगे तो भी सेम ही साउंड मिलेगा और पावर पे बजाओगे तब भी सेम ही साउंड आपको मिलेगा। तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। तो इसको जो आप लोग ज़रूर से परचेस कर सकते हो इस प्राइस पॉइंट में, अगर आप लोग आउटडोर में यूज़ करना चाहते हो। और इंडोर में यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा अगर आप लोग वॉल्यूम कम करके प्ले करोगे तो आप लोग इसको यूज़ कर पाएंगे, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये जो है वैल्यू फॉर मनी है। और इसका साउंड क्वालिटी जो है फटता भी नहीं, अगर आप लोग फुल साउंड पे प्ले करोगे तब भी इसका साउंड जो है नहीं फटेगा। तो आप लोग इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो गाइस, इस प्राइस पॉइंट में बेस्ट स्पीकर जो है ये है। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये साउंड टेस्टिंग वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।